तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, विथाउट क्लियर फिक्स और विथ क्लियर फिक्स। यहाँ पे जो इमेज दिए है, ये इमेज और ये जो कंटेंट का बॉर्डर पार्ट है, उससे इमेज ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो इसलिए ये फिक्स नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये जो क्लेरिफिक्स है, क्लियर फिक्स है, ये क्लास है। इसके अंदर हम अगर क्लियर फिक्स यूज करके ओवरफ्लो अगर ऑटो देते तो इस तरह हो जाएगा, बोल रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे बताया क्या, इफ एन एलिमेंट इज टेलर देन द एलिमेंट कंटेनर इट इज floated, it will be overflow outside its container, then we can add overflow auto to the container element to fix this problem। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ ये वाला। या सो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये कोड कोड में ही पता चलेगा आपको। वेट, कोड कहाँ गया इसका। यहाँ पे देखो, जो कि डी, ये जो div है, इसके अंदर क्लियर फिक्स डाला हुआ है क्लास नेम, बट ये जो div है इसके अंदर नहीं डाला गया है, ये वाला। ओके, तो डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पे क्लियर फिक्स यूज करते हो क्लास, इसको एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लाइक फॉन्ट साइज जो रहता है बॉक्स का अंदर, तो यहाँ पे आपको या क्लियर फिक्स आफ्टर ये यूज किया गया है। और एक दिखा रहा हूँ, वेट कहाँ गया, वो वाला था यहाँ पे। या ये वाला क्लियर फिक्स ऑटो फ्लो, सॉरी ओवरफ्लो ऑटो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि क्लियर फिक्स अगर ऑटो निकाल देते, देखो क्या चेंज होता है। ओके, ये चेंज होता है। अगर मैंने क्या कुछ अलग किया, जैसे कि कुछ अलग क्लास नेम लिया है, अगर मैंने फिक्स नहीं ली, फिक्स क्लास निकल दिया इससे, क्लियर ओनली क्लियर क्लास लिया, अगर इसमें अगर मैंने क्लियर क्लास अप्लाई करता हूँ तो होता है भी। ओके, ये क्लियर फिक्स जैसे कि क्लास बोलते हैं उसको क्लास, बट हम क्लास नहीं बोलते। अगर देखो कोई भी क्लास अगर यूज करते हैं उसके अंदर हम ओवरफ्लो ऑटो डालते हैं तो हो जाता है। तो ऐसी जरूरत नहीं कि हम क्लियर फिक्स ही यूज करें इन दैट, लाइक कौन सा डीप भी क्लास यूज करें, तो जो जो क्लास भी यूज करके हम ओवरफ्लो ऑटो दे सकते हैं। ओके, ये क्लियर फिक्स। ओके सर। सर मेरा डाउट एक्चुअली कंटेंट, ये जो क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी है इसमें कंटेंट का एक वो है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंटेंट आफ्टर कंटेंट क्लियर ये बोथ, वाला, ये था हाँ, हाँ हाँ तो हाँ, वो अब क्लियर हो गया है। ओके ओके, अभी क्लियर हो गया ना। ये आफ्टर जो है, जो कि कंटेंट का, जैसे कि कंटेंट यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि कुछ कंटेंट नहीं है इसके अंदर, आप हमने लिखे थे जी कि आफ्टर और बिफोर हमने डिस्कस किए थे सीएसएस में, आई थिंक। यस सर, किए थे। ओके, और क्लियर बोथ क्या है, क्लियर बोथ ये है कि अगर कोई भी साइड से अगर आप फ्लोट लेफ्ट देते, वो साइज अगर कोई भी इमेज जैसे कि फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट नहीं होता है, तो यहाँ पे हमको क्लियर बोथ करना पड़ता है। तो क्लियर बोथ करने के बाद ही फ्लोट और राइट और लेफ्ट जो भी आप देते होते हैं, वो एडवांस लेवल का थोड़ा है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं और एक जो डाउट था आपका बाद में बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा बिजी हो गया, मैंने वो देखा नहीं अभी तक। ओके सर, नो प्रॉब्लम। Okay, guys, so let's start the session. Today we are discussing JavaScript. Okay, so before that, we are discussing like introduction of JavaScript, what is JavaScript, and where we need to use that JavaScript, and
in HTML for web development, why we are using that JavaScript for like development approach? Let's see. So first thing is, what is JavaScript? So JavaScript is a open source cross-platform language that support functional, structural, and object-oriented programming language. So what is object-oriented programming language? We are discussing later. But Java definition of JavaScript is a open source class cross-platform language. Cross-platform language means it will be support like if you if you're designing a website for like in that Chrome browser, or for like Opera Mini browser, or many other browser also. If you're designing that particular website, this is the cross-platform language. Okay, so JavaScript is a lightweight and interpreted just in compiled programming language. And what is interpreter and what is compile? Interpreter means it is responsible for line by line translation when it is used to the browser. So, interpreter means line by line translate, and compiler means it's a server side or database. Okay, it will be translate once a time, but in that interpreter it will be translated line by line. This is the difference between interpreter and compiler language. Okay, so JavaScript is a lightweight interpreter and just in compile programming language. What is just in time? Just in time indicate that it's loaded, compile, and process in the browser. Means when you write the any coding in that particular in JavaScript, so it will be loaded to the memory and it will be compiled and it will process, and after the processing it will be if any error will be formed, it will be showing the error form. If there is no error, then it display all this like functionality and structure whatever you have to write inside that coding part. It's JavaScript. Okay, so JavaScript used in HTML also, Node.js also, and MongoDB and Flask. So where we are using like HTML, JavaScript in HTML. So in client side programming, we are using JavaScript in HTML, and in server side programming, which is we are designing a client side programming. But before, if you know that Node.js other server side language, so JavaScript is used to design the server side language in Node.js. And database, we have many like database. MongoDB, one of that like in front end in that main stack developer or whatever. So database in MongoDB, we are using JavaScript also. So animation with class, we are using JavaScript. So JavaScript is a what is a vast platform to use in that in the front end development, because so it is important to learn and understand these things. What are the JavaScript and where we are using all the JavaScript? Okay, I hope you understand. You have got a decent idea about what is JavaScript. Okay, so if you go to the like history about like JavaScript, Brendan Each designed the script language 1994 for Netscape communication by name of Mocha. What is the name of Mocha? Mocha is a browser designed by the Brendan Each in 1994 for Netscape communication. Netscape communication is the organization. So Brendan is designing for the organization by name of Mocha. Okay. Later, its name is Java, LiveScript. The Mocha name later will be rename it LiveScript. Okay. And after it will be JavaScript named by that Micro Systems. Okay. Sun Microsystem. Sorry, it's Sun Microsystem. Okay. So JavaScript is follow the ECMA script. So what is ECMA? ECMA means European Computer Manufacturing Association. It is the full form of like ECMA. So it follow that standard. If you know in that, if you searching any job in that, say that they will require ECM 8 like ECM 5, whatever they will providing I need ECM 5 version for the development at 6 version whatever. So we have many more version for that, and we have like ES 8,
ES means it's a JavaScript also. Okay. So why we need to JavaScript in HTML for web development? So main thing is JavaScript reduce the burden on server by managing interaction with the client side. It is a client side. So like whatever we are using for the client side, so it like we need to be using server side also for designing the website. So if we write all these things in the server side, this will be more burden to that server side. That's why we are using JavaScript for like decrease the reduce the burden of the server. That's why. Okay. So it is used to manipulation the HTML too. What is DOM? This data object model. Okay. So when we are using the JavaScript, like adding element into the page, removing element into the page, and modifying data or element in that like page, and managing validation for data in element. Okay, so basically, like JavaScript is used to adding element into the page, removing element in the page, and modifying data in element, and modifying validation for data in element. Okay, here the form we are using for that JavaScript. Okay, so you know that every language have a demerit. It's like merit and demerit is there. Okay, so what is the demerit are there in that like JavaScript? It is a browser compatibility issue. What is browser compatibility issue? I already told you that if you designing a particular like website, and if you open in the Chrome, and if you open the net, what is that? It's microsystem, or what is that? Its name is, oh yeah, Microsoft Edge. Okay, Microsoft Edge. If you open in the both form, some option is working in that Chrome, and some option may not be working in that Microsoft Edge. So this is the browser compatibility issue. So next thing is security memory leak. So it is not safe in that designing that one. It is security memory leak. Next one we have lot of DOM manipulation. So what is DOM? You have to understand all these things later. But no, you know that you remember these things, like lot of DOM manipulation are using for that JavaScript. It is a demerit. Okay? And it not supported all the feature of O features. It's object oriented programming feature. And like you know that if you go in that college and have you asked to anyone like what is JavaScript, they will give you answer like JavaScript is object oriented programming language. But it's not a object oriented programming language because it's not supported all the feature of object oriented programming language. That's why it's not a object oriented programming language. Okay, it's like support like a couple of feature of it's object oriented programming. So it's not a object oriented programming language. Okay, you have to remember all these things. Not definition is JavaScript. I already told you that one. It's not you have to like give the perfect answer for that. If you like give that answer like JavaScript object oriented programming language, then anyone ask you like is it support all the feature of the Java like object oriented programming language? That's that you may or may not be answer is no or yes, whatever. You know that all this thing. But in JavaScript object oriented programming not support like not so all the feature. Okay, so next feature is like demerit is not a strongly typed language. Strongly typed language. What is strongly typed language? Means if you know C and like C++ or like Java, whatever. So in that you need to be define the variable, and inside that you have to declaration assigning or all these things is mandatory in that. But in JavaScript, it's not mandatory. Without using like variable, you can defining any you can assigning a value. It's if in that what is C, we are giving integer, it's a variable integer, it's like a equal to 5. Okay, but in the JavaScript we can write it's a equal to 5 directly, and it also work in that JavaScript also. But when I use like strict mode, then it's not working. So JavaScript is not a strongly typed language.
I hope you understand what are the demerit in the JavaScript, and how we are like mm, solve all the issue, in that browser compatibility issue and security memory leak, all these things by using any of that library. It's JavaScript library. You know that JavaScript library we have React.js, we have Angular, and we have Vue.js. All these libraries there. So by using that, we are do all the demerit to that merit. Means it's memory security memory leak and browser compatibility issue, all these things we are managed by using other third party website or third party library. Okay, so next thing is, any doubt in that basic of JavaScript you can ask me. हेलो सर। Yeah. सर अपने लोग कोई एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं? हाँ, जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते, क्योंकि जो कि सर्वर साइड में जो भी कोडिंग लिखना होता है, अगर ज़्यादा कोडिंग वहाँ लिख दे अगर सर्वर साइड में, वो ज़्यादा लोड हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर मैंने सब ज़्यादा काम दे दिया, आपका ऊपर लोड हो जाता है, तो आप करने मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर दे देता हूँ मैं, आप भी करते हैं तो स्लोली करेंगे। जैसे कि आपको अगर मैं छोटा काम दूँ 5 दिन में करते, तो अगर बड़ा काम देता हूँ तो 15 दिन 20 दिन में करते आप, तो ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अगर जावास्क्रिप्ट पे काम जावास्क्रिप्ट ना यूज़ करें, तो ये लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सर्वर में लोड ज़्यादा हो जाएगा तो लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कस्टमर आते, क्लाइंट आते, वहाँ पे जो भी सर्च करेंगे, लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे कि पैसेंस नहीं रहेगा उनका, क्लोज कर लेंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा वेब डिज़ाइनिंग करने का और वेब डेवलपमेंट करने का, यही मतलब है। सर पहले तो 95 से पहले तो सर बिना जावास्क्रिप्ट के भी वेबसाइट बनते थे ना? हाँ, तो अगर आप 1995 का वेबसाइट देखो और अभी का वेबसाइट देखो, कितना चेंज हो गया। ओके, जो कलर वगैरह और फंक्शनलिटी जो भी होता है, ऐसे नहीं था ना। अगर आप विथाउट यूजिंग एनी, जैसे कि आप रिएक्ट जैसे यूज़ नहीं करके अगर कोई वेबसाइट बनाते, तो वो जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए। ओके, तो रिएक्ट जेएस यूज करके और एंगुलर यूज करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। मीन्स एक पेज है आपको, जैसे कि अगर कोई लिंक को क्लिक करे तो वो दूसरे पेज में जाता है। बट सिंगल पेज एप्लीकेशन इस एसपीए में, अगर आप रिएक्ट जेएस यूज करते हैं, एंगुलर यूज करते हैं, वहाँ पे आपको एक ही पेज में सब डाटा मिल जाता है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे पेज में नहीं जाना पड़ता है। यही बेनिफिट है शायद। सर कोई रियल लाइफ यस। को बढ़िया से समझ में आ जाए। हाँ, आप फिर से रिपीट किए, रिपीट कोई कीजिए। सर रियल लाइफ एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेबसाइट में, रियल लाइफ। रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब हम लोग से बढ़िया से परिचित हैं हम लोग उससे। ये तो सर्वर साइड बेड़ा हो गया, ये तो सर थोड़ा एडवांस हो गया ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में हो गया ना। हाँ। जो हम लोग को डायरेक्टली देखने को मिलता है इफेक्ट वेबसाइट पर, वैसा कुछ एप्लीकेशन। ओके ओके, इफेक्ट जैसे कि जावास्क्रिप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये आप बोल रहे, राइट? हाँ हाँ। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक पॉपअप बॉक्स चाहिए, कि मुझे जब यूज़र रॉन्ग डाटा इनपुट करे, तभी मुझे एरर दिखाना है यूज़र को। अगर मैंने कुछ जैसे कि पॉपअप बॉक्स देना है, और जैसे कि अगर आप सबमिट करते हैं तो ऊपर में एक पॉपअप बॉक्स आता है और अलर्ट आता है, तो ये हम जैसे कि CSS और HTML यूज कर सकते, बट फंक्शनलिटी नहीं कर सकते। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने कल पूछा था, कौन आई थिंक, तो हम कैसे, जैसे कि अगर हम लॉगिन पेज बनाते या रजिस्ट्रेशन पेज बनाते, वहाँ पे हमको वैलिडेशन देना पड़ता है, पैटर्न देना पड़ता है कि पासवर्ड का ये होना चाहिए पैटर्न, जैसे कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, ऑल द स्मॉल लेटर, एंड वन नंबर एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, ये होता है। अगर यूजर अगर नहीं देता है, जैसे कि मैचिंग नहीं करता है वो जैसे कि हम जो भी पैटर्न दिए, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन प्रोसेस नहीं यूज करेंगे, तो वो तो जो भी जैसे कि डाटा देके चला जाएगा, जैसे कि उसको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप जीमेल देखे हो तो जीमेल में हम हमारा जो जैसे कि लॉगिन करते हैं, वहाँ पे हमारे डाटाबेस में ईमेल आईडी होता है, उसका पासवर्ड होता है। अगर हम लॉगिन करते हैं तो डाटाबेस में जाता है, चेक होता है, अगर डाटाबेस में हमारा डाटा है या नहीं है, अगर है तो हमको एक्सेस मिलता है।
तो यही डिफरेंस है. हाँ ओके, थैंक यू सर. Okay. Anyone and have any doubt? You can ask me, guys. In that introduction part, it's basic. So next we have to go like JavaScript. How we are using JavaScript, like in inline, like in the external file, in that internal file also. Before that, any doubt? सर, Yeah. जावास्क्रिप्ट कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, दोनों है. हाँ, दोनों है. तो दोनों कैसे हो सकती है? मीन्स दोनों में देखो यहाँ पे जैसे कि अगर ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट बेसिस में क्या होता है, 1 by 1 ट्रांसलेट होता है. हाँ. Okay. अगर कंपाइल बेस में होता है तो जैसे कि पूरे कोड को कंपाइल करता है. हाँ. जो ये जो है कंपाइल बेस ज़्यादा ये अभी यूज़ करते हैं हम. जैसे कि कोडिंग 1 by 1 नहीं होता है. अगर 1 by 1 होता है तो जैसे कि ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आप 1 by 1 कोडिंग चेक करते हैं तो ज़्यादा टाइम समय लगेगा, बट कंपाइलर में चेक करते तो एक समय भी हो जाता है, जैसे कि लोडिंग टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा. ओके. तो सर यहाँ पर तो सिर्फ कंपाइलर बेस्ड हुआ ना, इंटरप्रेटर तो हुआ ही नहीं. हाँ, कंपाइलर बेस ज़्यादा यूज़ होता है, बट जैसे कि अगर हम जैसे कि कोई अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते, जैसे कि थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो वहाँ पे जैसे कि इंटरप्रेटर भी होता है. ओके सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. एनीवन हैव एनी डाउट, गाइस? Okay, thank you so much for your understanding. Next we have to go forward like JavaScript using HTML fields. How we are using like in JavaScript in that HTML. That's so basically we have in the CSS also we are discussing, we are link that file by using like external file and internal file, and it's embedded, or like in that particularly inside that tag. So we can use the option in the JavaScript also. Wait. Can you see my screen, guys? यस सर. Okay. यस. Yeah. So first thing is we are discussing in the inline. First one is how we are designing like a particular website in HTML by using JavaScript. Let's see. So I will create a file inside that. It's demo. Okay, JS demo. Not JS. You have to write the name JS, but we are using in that file like HTML because I will show you that. First thing, we are giving that title name demo. Okay. So next we need to designing. I will write heading inside that. Click to paint a page. Paint. Click the button. Button. Paint. Page. So inside that, below that header,
I will write a button part, button. Okay. So inside I will write a button name is print. Okay. And on click is a event. Okay. So in this event I need Windows print. This is a function, but it's a default function. Okay, we are using a default function. On click is a event. Inside that we are want to print the page. So if I open that one in the live server, wait a minute. Yeah, it's open now. Have you observed that one? It's like click to the button, print page or print the page or whatever. Okay, I will write inside that. When I click that print button, it will print my page. Have you observed that one? Before that, in that like CSS, I will like show you that one. I will click in click right click on that particular page and go to the option. It's print the page. But by using like in the JavaScript, we can do that print option also. This is inline JavaScript. Okay. So next, how we write that one by using like embedded. That's it. Okay. So next one I need to describe. So script we are using for like inline or embedded. What happened? Okay. So inside I will write all my what are the JavaScript inside that script. You have to write this script tag inside the head. Okay. So I will write a function inside print is my function. Okay. Inside that script I will write the function is function print. Okay. So inside I need windows dot print. If you want to, it's not mandatory to you have to mention that print option, print like name inside that. You can give any name according to your requirement. Is print. If I return inside that, you have to write that one also in page page print. Okay, this is the function. Let's see. When I click that particular page, it will be function is same like in that print the page. Okay, so by using embedded we can do that also. Okay, so how we create a particular like JavaScript file, then how we link that particular external file in that HTML. Let's see. I will create a file inside that sorry folder. I need it's JS. Inside that JS demo.js. Okay, so inside I need mention that name function. Okay, that page print windows dot print. Okay, windows yeah windows dot print. Then
So next I need link that particular file. Wait, I will link that particular file. Script src dot slash js. It's like js demo.js. Okay. You have to mention that MIME type. It's like text by JavaScript. Okay. Text by CSS. We are defining that CSS for MIME type, and you have to write inside that it's text by JavaScript. Okay. It's mandatory. Next we are open that one. When I click that particular print option, it's also working fine. Okay. If I change something in that, it's like p external external file of file JavaScript. Okay. Great. Okay, it's printing now. It's a file JavaScript. In that, we have all these things. Like it print a page. Okay. So next we are discussing like JavaScript not is a like strongly typed language. How we have to see all these things and how we can like designing a particular JavaScript file in this state mode. Let's see. We'll show you that. So that I need function. Any function. It's function name is f1. My function name is f1 inside. If I defining x equal 20, and whatever number you have to write inside that. I want to print the name by using document.write. Document.write. Wait, it's not required that one. Yeah. X is my string inside that. Okay. X equal, and inside that this is the concatenator in that we are printing x. Okay, let's see what happened. Wait, yeah, we are not call the function, right? You have to call that function. It's printing now. Okay, if you want, when I click that particular button it will be fire off. It's it also working fine. Let's see, I will show you that one. If I call that function inside that, when I click that button, when I click that print button, it will be fire off. Okay. If you want to change the name, show it. When I click the show it, it will be fire off. Okay. The like value will be shown in that particularly. Okay. This is the like functionality we can do that by using JavaScript. If you want to, in particularly when you submitting in a form, you want to display something by using like JavaScript, we can do that also. Okay. So no need to worry about that. What is the document.write? What is function? I will like later I will discuss with all this like in deep. What is function and yeah, what is like हेलो call सर. yeah. हेलो. सर Yes. ये जो अपन लोग लिखे हैं x इक्वल टू प्लस एक्स. ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट Yeah. में Yeah. यहाँ पर x सर स्ट्रिंग के फॉर्म में सर प्रिंट हो रहा है. हाँ हाँ, इसको मैंने जैसे कि अगर मैंने ये प्रिंट करना चाहता हूँ x इक्वल टू देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रिंग से लिख लिया. अगर x अगर दे दूँ ऐसे ही तो वो जैसे कि ये नंबर प्रिंट कर देगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग यूज करके दिया है. ओके, इसको सर अगर टाइप आप ऑफ अभी अगर x लिखेंगे तो टाइप ऑफ x हाँ हाँ यहाँ पे हाँ हाँ
ये प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग का फॉर्म में, जो भी आप प्रिंट करेंगे वहाँ स्ट्रिंग का फॉर्म में ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर आपका नाम भी लिखो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सर नहीं, ये नहीं, डाटा टाइप सर एक्स का क्या होगा, स्ट्रिंग का होगा ना? ये वाला हाँ नंबर हाँ का होगा, टाइप सर, ऑफ। लेकिन इसको तो सर स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया ना सर, प्लस लिखकर स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं तो सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये इसको प्रिंट करना चाहता हूँ जैसे कि स्ट्रिंग प्लस मेरा जो नंबर है ये यूज करके, इसलिए मैंने स्ट्रिंग यूज किया, कंफ्यूज मत होना। ये अगर आप हाँ नंबर अगर प्रिंट करना चाहता हो, ओनली नंबर, देन आप प्रिंट कर हम्म, सकते हैं, ओनली एक्स दे के प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नो वरी। हम्म, बट मैंने मैंने आपको शो करने के लिए यही दिया, दे एक्स का वैल्यू है। अगर मैंने ऐसे लिखा वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें मैंने दिया तो ये प्रिंट करेगा। बट मुझे आपको शो करना है क्या, वेट, फायर अप क्यों नहीं कर रहा है, सर कंटेनर चाहिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे मुझे आपको शो करना था कि एक्स का वैल्यू ये है, तो इसलिए मैंने ये यूज किया। ओके, ओके सर, ओके सर। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नाम जैसे कि वैल्यू है। ओके, so guys, have you observed that one? I will not using any of the particularly in the variable, and this is a whatever variable is integer variable or like string variable, whatever value variable, I don't know about that also. Okay, it is like not a strongly typed language. Okay, but if you using like particularly in that TypeScript, like in that Java or like wherever, like in C++, it's not working. It will be so in that error form, like it's not defining, or like it's like data type not defining in that form. If I use strict mode in that, it will be giving me error. How, let's see. If I using use strict, wait, use strict, इट शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या एरर हो, what is the error in that JavaScript? I will show you that one. Yeah, in the console we have to go to the console, and when I click that particularly show it, have you observed that one, x is not defining, it will be showing the error is x is not defining in that form. Okay, x is not defining. When I give that inside that variable x equal to 20, when I refresh the page, and when I click that particularly show it button, it will be show me all these things, nothing will be error. Okay, so by using that use strict mode, use strict, we can strict the particular in JavaScript. Okay, when you're developing any particular in a live project, then you have to use strict, because if you like forget to give that variable name, it will be difficult to, if any of the senior developer may be seeing these things, it is a like maybe in that impression is bad impression will be created. Okay, then you have to always follow the rule of that, what is the variable, and whatever variable you are assigning that form, it will be assigning, like you have to write inside the JavaScript. Okay, so this one is that inline, embedded, and mm, external file. How we are linking that in that HTML, I already showed that one. And what is strict mode, and how, like I already told you that JavaScript is not a strongly typed language, and we can do that. It's by use strict, in the strict mode JavaScript is that strongly typed language. Okay, so next thing is uh, I told you that like JavaScript is not a JavaScript to like legacy browser. It is a browser compatibility issue. I already told you that one. So browser compatibility issue means there is a, if I using legacy browser or like modern browser, it will be different. What is legacy browser? Legacy browser means when you using like 4. If you using like what is that? Yeah, home or like Microsoft Edge in that, like in that old version, it's 4.0 or something.
it may be not working. Okay, it may working or may not working. So you have to, let's say like we have HTML comment. We have to write inside that whole code in JavaScript. How? Let's see. I will. So whatever you are write inside the like JavaScript, then you have to use like HTML comment. Okay, HTML comment inside that. Wait, I will show you that one. Inside that you have to write all this coding. Okay, this will be like solve the browser compatibility issue. Okay, so basically we are using to solve the browser compatibility issue by using what is that, it's comment, HTML comment, whole the coding, JavaScript coding in that HTML comment. Okay, this is the it will be clear the legacy browser or like to work in the legacy browser as well as the modern browser also. Okay, so I hope you understand all the things. If any doubt you can ask me, then we have to go forward. Like how we print, if I using like you want to print something uh, other like value, then you have to use y and whatever. It's if I 10, if I want to add something, that then I need to use that x plus y, x plus, yeah, plus y. Okay, x30, 10 plus 20, I think, yeah, 10 or 20 plus 10. Okay, x is 20 and y is 10. Okay, so this is the like form of JavaScript we are using. So any doubt regarding, you can ask me. सर Yeah. यूजिंग जावास्क्रिप्ट मुझे बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो कैसे होगा? बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हाँ, वो तो जो हम शो फंक्शन, हाँ बोलो बोलो। शो इट है ना HTML में बटन, हम्म, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फिर विड्थ हाइट कुछ भी चेंज करना है? फंक्शनलिटी जैसे कि आपको अगर मैं क्लिक करूँ वहां पे इसके बाद चेंज करना है, या पर्टिकुलरली आप डिफॉल्ट में चेंज करना चाहते हैं? नहीं, अगर शो इट जो बटन है ना उस पर अगर मैंने क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। मतलब हाँ, मेरा डाउट ये है कि अगर मैंने बटन क्लिक की और मुझे HTML पेज पर किसी भी चीज की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। हाँ चेंज कर सकते हैं हम। बाद में ये बताऊंगा मैंने, हमने आईडी एक्सेस करना है, जैसे आईडी एक्सेस करके कैसे हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कैसे वैल्यू चेंज करेंगे, ये बताऊंगा बाद में। और हमारा जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट यूज करके भी जो भी कंडीशन दे सकते हैं। ओके, ओके सर। आपका जो भी इशू है गाइस, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जो भी करना है आप कर सकते हैं, बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने शुरू ही किया है, अंदर तक नहीं गया है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आईडी को कैसे एक्सेस करके हम डाटा डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप अगर कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं अंदर, इफ़ यू वांट टू लाइक ऐड ए टेक्स्ट इनसाइड दैट HTML, then by using JavaScript we can do that, but you need to be access that particularly the ID, or like by using like tag, by using like class, whatever we are using inside that to access the particular tag or class or like ID. So at first we understand how we access by using like ID, by using class, by using tag, and whatever there in that JavaScript. Okay, after accessing that particularly ID and class and tag, then we have to add something like whatever color we need. Like if you want to change the color, if you want to add the text when you click the button, you can do that, and yeah, like all the issue we can solve. But if you want to like learn more in that form, because JavaScript is a like vast uh, chapter is that. Okay, but we are discussing like basic in that, how a statement work and function, like op object and how it work. Okay, but you have to try yourself, because we don't have that much like time in that, because I think your internship will be finished in that September 10 or I think it's like 15, I think 15, yeah, it's 20 day left, or 22 or 23 day left. So if I
I need to be teach you like JavaScript as well as the Bootstrap also. So I will teach you deep, not deep inside that, but because you have to try yourself. I will teach you how we can do these all these things, and I will tell you that one like how we all the functionality we can do. And if you have any doubt regarding all these things, you can ask me personally also, because if I discuss all these things in the class, that it will be in that it's taking more time to discuss, because you know that if you go to the any like training center, they will teach you like web development in the 6 month or like 7 month, because they will be taught each and every topic in that deeply. Okay. So it is a vast topic, because we have class, like we have function. In that function we have many like we have to by using like how we access one class to another class, and we have constructor, we have any other we have that. So at first after discussing access to the id and class, we have to go like variable, what is variable, what is constant, what is let keyword, what is the keyword, what is the difference between that. And next we have to go to the primitive data type and non-primitive data type. In that non-primitive data type, what are the function, method, all these things are there. And that like primitive data type, we have like what are the we are using for that variable, statement, expression, whatever are there, we are discussing in that deeply. Okay. So I hope you understand all these things, and you have to get decent idea about like introduction about JavaScript, and why we are using JavaScript, and what is that like demerit of JavaScript, and how we solve that like all the issue in that by using like legacy browser issue, or like strict mode, whatever is there in demerit, we can solve that issue by using any other third party website, or like by using just that thing like use strict mode, and like comment in that particularly whole the coding will be in that comment. Okay. So you can do that, but it will be update like day to day, so you have to update yourself. Because if I teach you something like use strict or like comment in that particularly in, whole the JavaScript code will be in, you have to put in that comment. It may be in that second like latest version it will be changed, so you have to update yourself. Okay. Next you have to like taught me like this not working, maybe not working because maybe latest version coming, and then will be deprecated that option. Okay, that's why you have to update yourself in that every day, because in the technical field you know that like you have to update yourself in that every day and every second and every minute. Okay. I hope you anyone no have any doubt in that. So please give your attendance in that chat box, then you can leave. Thank you so much guys, have a good day, bye. Kavita ma'am, hello Kavita ma'am, are you there? I think he's not there. Okay, not okay.